friends, so this is my first video after my introductory video on shopaholic. So हम start करते हैं अपनी shopaholicness with all the stuff which is my recent purchase. So मैं start करूँगी सबसे पहले so this is naked brush set. So this is really very useful for beginners, as I am a beginner in makeup and all. So I purchased this from Amazon. You can find all the description price, everything in the description box, and you can get it from Amazon. So you can see this box is very well packed, and this consists of 12 brushes. You can see, and this is packed like this. So this one is basically from Amazon. So this is Power Brush Naked 3 Urban Decay box. This box is completely, I love it. So this is consist of 12 brush set. So this is my good to go purchase. I like this one. You can get everything in description box. Okay, so with this, again from Amazon, I purchased one more thing. This is contour cream. So मुझे इस contour cream के reviews बहुत अच्छे मिले थे Amazon पे, and believe me, on the basis of review I purchased it, and seriously this is really very worth purchasing for me. So this much shades are available, you can see. So this much shades are available in one pack. And again, अगर आप नए makeup starter हो, like you are doing little makeup and you want to use contouring and all, so आपको separate contours खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि आप variety of contours खरीदो. आप इसमें से कोई भी एक shade pick करके और contouring start कर सकते हो. इसमें variety of shades है. You can choose what matches your skin. So this is a good and worth purchase for me. So this is contour cream series by Minnow.pro. I guess I spell it correct. So all the shopaholic, I will request, like if you are new in makeup and you want a contour cream, so you can purchase this palette. You can see this palette, and I will give all the details about this palette, from where you can buy it and what exactly it is, in my description box. So I want to maintain some hygiene of these brushes. So for making the hygiene, I purchased this. So I purchased this brush egg. This is a small brush egg. So what exactly it do, I will show you. So this is brush egg to wash your beauty brushes very well. So you need to wear this like this in your hand, and suppose this is your brush, and if you are using it, you just make some soap or any antiseptic kind of soap, and you can wash it like this. And this will this makes your brush and keep your brush very hygiene. But there are many ways to keep your brush clean and hygiene, so this is not a really worth purchase. You can skip it anyway. Third thing is, I always see most of the YouTubers use beauty blenders. So I purchased this pack of beauty blenders again from Amazon. Like जितने भी मैंने अभी तक दिखाए हैं वो सारे के सारे Amazon से purchased है. Again this one is from Amazon. So I will show you this. So these come in two shapes. One is this and one is this. So actually the quality of the blender is very good, and blender is actually required if you are wearing a lot of makeup, and if you are not wearing a lot of makeup, but if you are wearing something like layer by layer. Suppose if you are wearing the primer, then foundation, then sunscreen, or if only you are wearing foundation then over sunscreen. So what happens, you don't want to smudge your sunscreen with your foundation. You want to make a good layer of it. So what this blender do, blender actually blends anything over your first layer or your primer,
so this will not smudge your makeup. So blender is worth to purchase. This is a good choice. You should have a blender. Now what I'm going to show is a very important purchase for everyone. This is this sunscreen. So yes, हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरीके की सनस्क्रीन यूज़ करनी है और हमें कब करनी है या फिर कैसे करनी है. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी. ये सनस्क्रीन मैंने कहाँ से ली है, कितने की ली है और ये सनस्क्रीन अभी कितने की मिल रही है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. बट मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन आई एवर फाउंड. सो बिफोर दिस आई वॉज यूजिंग लोटस सनस्क्रीन एंड लोटस सनस्क्रीन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली मैट फिनिश्ड सनस्क्रीन. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली लोटस मैट जेल SPF 50, but that contain paraben. Last three ingredient in this is paraben, so I quit it and I am switching to Lakme sunscreen. This is the reason, and this is the reason why this is a worth purchase. So this is a very important and mandatory purchase for every shopaholic. So please go and get one sunscreen. If you love your skin, you should have one sunscreen like this. So I would prefer you to have SPF 50 if on the daily basis you have to go in sun. So if you are spending more than 2 or 3 hours in the sun, you should have a good SPF factor. So this is the cream you should have. So ये आपको 7 to 8 आवर्स सन से प्रोटेक्ट करती है. इसका PA++ है, दैट मीन्स की प्रोटेक्शन लेवल काफ़ी अच्छा है और ये क्लॉग नहीं करती है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, सेंसिटिव स्किन के लिए है. सो ये एक बेस्ट क्रीम है. मतलब आप अगर ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, बट अगर आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हो तो गो विद दिस. ब्रांड भी बहुत अच्छा है और वर्थ टू परचेज है. सो दिस इज़ फॉर वर्थ, सो गो एंड परचेज दिस. अभी तक का मेरा रिसेंट परचेज ये था फॉर स्किन केयर एंड फॉर मेकअप एंड ऑल. नाउ अब हम जाते हैं फुटवेयर्स. तो मैंने रिसेंट परचेज में अभी फुटवेयर्स खरीदे हैं काफ़ी सारे विद दीज प्रोडक्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद sneakers. So this is white sneakers and I actually wore it many times, so this get little dirty. So ये मैंने I guess 1 or 2 weeks back खरीदे हैं और these are of superb quality. अगर आपको कोई भी डाउट है कि आप स्नीकर्स कहाँ से खरीदे, कैसे होंगे आएंगे तो ये वो, सो ये स्नीकर्स मैं आपको बता दूँ, ये स्नीकर्स मैंने मिंत्रा से ख़रीदे हैं. दीज आर वेरी हाई क्वालिटी, वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही क्लासी है. मतलब दीज आर स्मार्ट चॉइस एक्चुअली. सो वर्थ बाई. अगेन मैं कहूँगी कि ये जो है ये वर्थ है. तो इसके लिंक्स, प्राइस एंड एवरीथिंग विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट. सेकेंड इज़ I purchased something official but little fancy. You will love it, I guess. So I purchased this. These ballerina from Flipkart, and I found it that like my size is 37 and I purchased 37. When I first try it, it goes very well. Like this. I feel really very comfortable in these ballerina. These are very beautiful and I got a lot of compliments. बट जब मैं इन बैलरीनास को, स्पेशली मैं इनकी बात कर रही हूँ, तो जब मैं इन बैलरीनास को पहन के काफ़ी लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करती हूँ, लाइक मैं किसी मॉल में घूमती हूँ या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा वॉक करनी होती है, तो ये इरिटेट करते हैं. तो ये शोकेस के लिए तो अच्छे हैं. अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपको ज़्यादा चलना नहीं है तो ये बैलरीनास एक गुड ऑप्शन है, but they are not comfortable, so not a good choice of mine, not worth. क्योंकि जब तक मैं इसको वापस करने की बारी आई तब मुझे पता चला कि कंफर्टेबल नहीं है, तब तक इसकी रिटर्न डेट निकल चुकी है. so this is not a good choice to purchase. Second option is something in heel in beige color, so I purchased this. This is a very sophisticated, decent, and like these heels are not pencil heels, so I am very comfortable in this. And I purchased it from Amazon again. So Amazon gave me a very good product again, so you can find again all the price and description details in the description box. This is a good purchase. So if you want to have some
beige color or sophisticated office wear or party wear as well. So this sandal will be a good choice for you. So you can purchase this from Amazon. So these are the flats. You can see I wore this flats one time. I purchased this last week from Footins. So, and this one is next flat from Footins, you can see. So this is, I must say these two are worth buying because ये इतनी कंफर्टेबल है कि आप जब इसमें वॉक करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ पहना हुआ है. एंड दीज आर वेरी कंफर्टेबल. और ये 499 bucks की हैं और ये मैंने Footins के ऑफलाइन शोरूम से मतलब ख़रीदा है. दिस इज़ नॉट फ्रॉम ऑनलाइन, बट आपको ये ऑनलाइन भी मिल सकती हैं. बट ये मैंने ऑफलाइन खरीदी हैं. 499 की एक स्लीपर है, तो यू कैन कैलकुलेट लाइक 2 स्लीपर्स आई परचेज टुगेदर. सो ये स्लीपर्स जो है ये फ्लैट है. पहली चीज़ तो बहुत ही डिसेंट और सुंदर है, मतलब क्लास देती हैं आपको. तो आप ये स्लीपर्स भी खरीद सकते हैं. आप इनकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. एंड यू कैन हैव दीज स्लीपर्स. दीज आर वेरी क्लासी एंड गुड टू गो. So these all are right. I am done. So these all are my recent purchase from last 2 weeks. If you are around to purchase something which is similar to these products, so you can get some ideas from this video. So if you find this video very helpful, so please like this video and share, and please subscribe my channel. And all the details you will get in the description box. So if you want to analyze something else and if you have any queries, so you can write a comment. And if you want me to make any other video or any topic, so please let me know by commenting in the comment box. And till then, bye bye. Do shopping hard. Bye.